How are you, Shubham? Sir, I'm fine. And you? I'm also fine. Scoot over. SCOOTOVER. स्कूट ओवर का मतलब होता है हटाना या फिर हटा दो। ठीक है, जैसे कि बॉटल हटा दो, Sir, scoot over the bottle. कॉपी हटा दो, Scoot over the notebook. बाइक यहाँ से हटा दो, Scoot over the bike from here. पेन यहाँ से हटा दो, Scoot over the pen from here. पैसा यहाँ से हटा दो, Scoot over the money from the here. माइक वहाँ से हटा दो, Scoot over the mic from the here. कुर्सी वहाँ से हटा दो, Scoot over the chair from the here. कार हटा दो। Scoot over the car. मैं कार हटा सकता हूँ, I can scoot over the car. मैं बाइक हटा सकता हूँ, I can scoot over the bike. वह बाइक हटा सकता है, He can scoot over the bike. तुम माइक हटा सकते हो, You can scoot over the mic. तुम स्वेटर हटा सकते You हो, can scoot over the sweater. तुम टीवी हटा सकते You हो। can scoot over the TV. मैं बाइक हटाना चाहूंगा, I would like to scoot over the bike. मैं व्हाइट बोर्ड हटाना चाहूंगा, I would like to scoot over the whiteboard. वह कॉपी हटाना चाहेगा, He would like to scoot over the notebook. मैं कॉपी हटाने वाला हूँ। I am about to scoot over the notebook. So Mr. Shubham, how are you? Sir, I am fine, and you? I'm also fine. As you know very well, today it is Sunday special class. So how are you feeling right now? Sir, right now I am feeling very good. Good. So what do you want to say about Sunday class? Sir, I want to say this is a very fabulous class, and this day and we learn the special. In Sunday class, what are do you learn? Sir, we learn as like the motivation class and etc. This is like the most important for everyone. We say that there is a no use of the medicine, there is a use of the motivation. Can you speak English? Yes, sir, I can speak English. Do you know how to speak English? Yeah, I know, sir. I know very well how to speak English. Okay. कार चलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Sir, कार चलाने के इंग्लिश में ड्राइव अ कार कहते हैं. और जहाज चलाने क्या बोलते हैं? Sir, fly the plane. और ट्रेन चलाने क्या बोलते हैं? ट्रेन चलाने के लिए हम ट्रेन चलाने के लिए उसको लिए ड्राइव कराते हैं.